गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वन मार्क सोल्यूशन। एंड जैसा कि आपको पता है कि लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगातार सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले वो है रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए। एंड आपको पता है कि इस ईयर से सीबीएसई ने क्लास 12th में असर्शन, रीजनिंग और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है। तो निश्चित रूप से पिछला कुछ मटेरियल हमारे पास इससे रिलेटेड अवेलेबल नहीं है। बच्चों के पास कोई भी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसी साल इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी जो सैम्पल पेपर सीबीएसई का आया है, तो हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि वी कैन प्रोवाइड द कंटेंट रिलेटेड टू असर्शन रीजन एज वेल एज रिलेटेड टू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको समझ सकें कि उनको असर्शन रीजन के क्वेश्चन और केस स्टडी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको असर्शन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चंस में भी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो उसी को लेकर के एक प्रयास है जिसमें हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आज जो है चैप्टर 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मैडम शिल्पी तनेजा। मैडम तनेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मैम तनेजा मैम का ये थर्ड सेशन है इस प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले इन्होंने कल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का असर्शन रीजन और केस स्टडी के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया था। इससे पहले मैडम ने क्लास 12th के लिए ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट जो आपका एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड होता है उसके 1 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस तरह लगातार हमारे साथ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो जुड़ रहे हैं और बच्चों के लिए जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि बच्चे हमारे जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो उसी दिशा में एक हमारा प्रयास है। मैडम तनेजा इज वर्किंग एज अ पीजीटी एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर एकेडमिक्स इन हॉली पब्लिक स्कूल इन ग्रेटर नोएडा, और लंबा अनुभव है इकोनॉमिक्स टीचिंग का। तो निश्चित रूप से टीचिंग इकोनॉमिक्स का एक जो टीचर है, अभी पूरा एकेडमिक भी देख रही है मैडम, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है उसका प्रिपरेशन का भी मैडम काम करती हैं। और निश्चित रूप से हमारा आज का जो सेशन होगा बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और हमारे जो सब्जेक्ट जो कंटेंट पार्टनर है वो है वन क्वेश्चन एवरी टाइम, एंड वन क्वेश्चन एवरी टाइम इज डीलिंग विद एप्टीट्यूड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में वो डील करते हैं। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उनका एक इंस्टाग्राम हैंडल है वन क्वेश्चन एवरी टाइम के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हमारे साथ आज जो नए व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियोस देखने के लिए वो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको 1 मार्कर के कंटेंट्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में मिलेंगे। साथ ही साथ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन कंटेंट है उस पर भी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उस पर भी हम आ रहे हैं। आपको कुछ ही समय में एक्सप्लेनेशन कंटेंट भी मिलेंगे। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एक 1 मार्क सोल्यूशन आप डालेंगे इंस्टाग्राम पर, 1 मार्क सोल्यूशन के नाम से आप हमको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल एट एवरी सोशल मीडिया साइट्स। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं नाउ हैंडिंग ओवर टू मैडम तनेजा। मैम प्लीज। Thank you so much, sir. Good evening, everyone. So welcome once again for the class 12th preparation. I hope you all are getting ready for your board examination, and the practical date sheet is already proposed by CBSE, which is almost starting in February. So let's not waste the time. Now this is the peak time to get started with the preparations. Plan your subject-wise preparation. Divide your day for each subject, and students, I suggest you that daily you take at least main 3 subjects. Instead of covering all the subjects daily, you cover it up as 3 main subjects per day.
Now let's come on the session. This is regarding chapter 6, Rural Development of Indian Economics. So I have few questions for you for assertion and reason type and case and study, so that you can understand the basic concept. How are they going to come for your exam and how are you going to attempt them? All right. So this is first question on my screen, assertion and reason. Assertion is beta the statements. The statement will come to you and it will come along with the reason. Reason is may be related to the assertion or it may be different. Reason can be a reason of the assertion, like the statement which is given. Reason may be describing that statement itself. So you have to see, you have to read it carefully, and then only you will be able to decide. The options will be always the same for all the questions. It will be in the same sequence as well. Like first option will always be both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Second option will be both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Third option will be assertion is true, excuse me, but reason is false. And last option will be assertion is false, but reason is true. So you have to read the question carefully according to the options. Options are very much clear to you, I hope, because this is our third session and I have explained every time that what you have to do is see the options will remaining same. So you should know. Now, accordingly, you will be going to read the question. Options are very much clear in your mind, so you have to read the question. Assertion. Assertion will be the statement. Like this question, rural development is a comprehensive term which essentially focuses on the action of overall development of rural area. We are talking about the rural development, the area where the people are maximum depending upon the agriculture, that you already know. The urban areas are providing alternative sources of employment, but rural area is related to agriculture, like is related to primary sector, mainly with the agriculture or the activities which are derived by the agriculture. So most of the population is depending upon the agriculture basically. So here it is given that it is a comprehensive term. It is not a simple thing to do the rural development, because so many things are there, so many problems are there. But when we talk about rural development, it is a comprehensive term which is focusing on the action of overall development of the rural areas. And the reason is given, it is required to develop the standard of living of rural people. This is obvious, because when the development will be overall, then definitely it will lead to increase in the standard of living of the people, right? So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Now, coming towards next question, options will be same. So you set these options in your mind first of all. All right, now see, the question is, the statement assertion says that productive borrowings were done by farmers to buy seeds, fertilizers, etc. Productive borrowing. Borrowing is the money which somebody takes from some other person for some time, and they have to pay it back along with some interest. Borrowing is just like a loan, it's a loan only. So productive borrowings means the borrowings which are taken for the productive purposes. Productive borrowings were taken by the farmers to buy seeds, fertilizers, right? Reason is given that it leads to decrease in the old debts. Means what it is saying, that the old borrowings, see, when the farmers will be putting that borrowing into a productive purpose, they will definitely be increasing their upcoming income, future income. So out of that future income, they are going to pay back their old debts also, right? So the reason is correct. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Third question, assertion says measures were taken by the government to improve agricultural marketing. Now before starting, let us discuss agricultural marketing. Agricultural marketing किसको बोलते हैं? Agricultural marketing में
प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस है, जो क्रॉप्स हैं फार्मर्स की, उनकी क्वालिटी है ना, हार्वेस्टिंग के बाद उनको क्वालिटी वाइज ग्रेड करना, पैकेजिंग करना, उनको वेयर हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, दिस ऑल कम्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. मार्केटिंग मतलब जब तक वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएंगे और सेल करेंगे, तब तक वो जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के, रीजन इज गिवन, फार्मर्स while selling the product were not earning profits. क्या था, क्यों किया मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने? क्योंकि फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. अब प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा था? देखिए, आपको पता है यहाँ पे इंटरमीडियरीज काम कर रहे हैं. फार्मर्स से सस्ते में प्रोडक्ट खरीदना और उसको मार्केट में महंगे रेट्स में बेचना. तो एक्चुअली तो फार्मर्स आर वर्किंग हार्ड for the production, they should get the actual profit. So government has intervened into it and they had provided some measures to the farmers so that they can get the better profits than earlier. So the option, both assertion and reason are true, both are correct, and reason is the correct explanation of assertion, right? Next question. Use of HYV seeds, high yielding variety seeds, was done by the farmers. Here we are talking about green revolution, children, right? Green revolution mein high yielding variety seeds were introduced along with some other things like use of chemical fertilizers, use of better irrigation facilities. So this all was the part of green revolution. Reason is given, it was one of the reform under new economic policy. Is it correct? New economic policy was related to LPG, liberalization, privatization, and globalization. In that, we had not covered use of high yielding variety seeds. So the assertion is true, but reason is false. Assertion. Rural economic development is essential for Indian economic development. See, because we know the major population is belonging to the rural areas. So can we say this, that if the rural economic development is done, it will be representing the Indian development, Indian economic development, right? Reason is given, rural development creates opportunities in rural areas for education. If rural development will be creating the opportunities for the people who are living in rural areas, if they will be getting educated, they will be definitely having better skills than earlier. They will be using those skills for the development of agriculture, and definitely it will be the part of Indian economic development. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, right? Now, next question, assertion. Diversification of crops shifted from single cropping system to multiple cropping. What does it say? When we diversify our crops, diversify means when we use the same ground at the same time for multiple crops instead of growing only a single crop, right? Reason is given, it increases the risk of market arised due to price fluctuation. जो prices fluctuations होती हैं उसका risk बढ़ जाता है. Is it related? Diversification of crops जो है बेटा, वो एक हमारा एक measure है जिससे हम better कर सके अपनी cropping को. And the reason is definitely different from this concept. So assertion is true, but reason is false. Next question. Assertion says long-term credit are required for purchasing machinery and constructing fences. Long-term credit, देखो, when we talk about the credit which is provided to the farmers, we have two types of loans, two types of credit system. One is short-term credit and second is long-term credit. अब short-term credit जो होता है, that is less than 5 years, okay? And the long-term credit is taken for 5 to 20 years. But here what it is saying,
कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है दैट इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली फॉर परचेजिंग मशीनरी. हमको बड़ा जब इन्वेस्टमेंट करना है ना, जब हमको अमाउंट ज्यादा चाहिए, इट मीन्स वी आर टेकिंग बिग अमाउंट ऑन क्रेडिट that will be used for maybe purchasing machinery or constructing fences. It depends upon person to person, but the reason is wrong. Here they have mentioned that these are taken for 12 months to 5 years, but what I told you is long term credit is taken for more than 5 years. It may be reached to 20 years, up to 20 years. So the assertion is true and reason is false. Next question. Assertion is given farmers were using primitive technology. Primitive technology क्या है? पुरानी तकनीक, पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे farmers in India. Reason, farmers were unaware of the technology and were poor. क्यों यूज करते? अगर उनको हमने प्रोवाइड करवाई होती अच्छी टेक्नोलॉजी on the cheaper rates or on the easy terms of credit, तो maybe they must be using the latest technology also. So because the farmers were unaware of the technology and also they don't had such amount to put into the investment. So assertion is true, reason is also true, and reason is the correct explanation of not using of the new technology of production by the farmers. Moving to the next question. NABARD. I hope you all are aware of NABARD. NABARD was set up to give loans to farmers. NABARD is an institution. You can have a short note to be like you should know about NABARD because it can come as an individual question that write a short note on NABARD. All right. Reason is given, it is an apex body to coordinate all institutions involved in rural financing system. So NABARD was set up to give loans. This is correct. But it was set up as an apex body. It was set up for maintaining all rules and regulations for the institutions. Institutions were working under NABARD, to whom he was instructing, to whom he was giving the rate of interest and the other terms also. So reason is definitely correct. But NABARD was not only set up to give loans to farmers. It was working as an apex body and it was regulating. It was having control over all other institutions who were engaged in giving loans to the farmers. All right. Next question. Assertion, role of information technology. What is information technology? Where we are getting all the latest information through computers, through information technology. We can see still you are using information technology only. You are getting all this information through the use of computer. You are getting all the latest information only by sitting in your own room, right? So in the rural areas also, the role of technology was essential because they had to get the latest information, they had to get the latest technology, they had to get the information about latest seeds, latest ways, what are in practice these days, what are the options available in the country, what they are getting is sufficient or not, the amount, the rate fixed by the government, what is MSP. What is MSP? MSP is minimum support price, which is announced by the government in the favor of farmers, which is the minimum price at which the farmers should sell off their product, or that is the minimum price which they should get in return of the sale of their produce. So reason is given, farmers were interested in learning computers. Is it related? Do you feel so? Farmers were only interested in learning computers. That's why information technology was essential only in rural sector? No, because to get all the latest information about the technology, about the prices of their product, they were in need of information technology. So assertion is true, but reason is false. Coming to the next question. This is case study or report based type question. See, the policy intervening rural credit agriculture has always been credit driven.
This is even more pronounced in the recent interventions made by the state in the package announced for distressed farmers in doubling agricultural credit, providing subvention and putting an upper cap on interest rates for agricultural loans. This is related to the credit which is provided to the farmers in the rural areas. This report is clearly telling about the recent interventions which is given by the which is done by the government side, how they are helping, how they are going to help the farmers by doubling the agricultural credit, by providing them more amount of credit for distressed farmers. What is distressed farmers? Have you heard about distress sales? Distress sales is when they are under pressure, when the farmers are under pressure to sell off their crops at the price whatever is offered to them, because they don't have the space to keep their things in store. They don't have time to get the money because they are in urgent need of money, so they have to sell it. Okay, so the distressed farmers who are under stress, for those farmers government is providing some measures. Looking specifically at rural financial markets using some primary data, we argue that it is necessary to understand the rural financial market from demand side. हमें बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल फाइनेंशियल मार्केट, जो लोग रूरल एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको डिमांड साइड से समझना, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे फंड्स की रूरल एरिया में, उसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ question will be based upon the information either which you are getting by the passage or which you had already have with you from your chapter. All right. So here the first question, mention any two sources of rural credit in India. Because we are talking about rural credit only in the passage, in the extract, so the question is asking about the two sources, and I hope you all are aware of these two. Answer is institutional and non-institutional sources. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या हो जाता है, हमारा जो नबार्ड है, नबार्ड के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन सेट किए गए हैं जो फॉर्मली लोन क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को, दे कम अंडर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपको पता होगा जमींदार जो है वो लोन दे देते थे फार्मर्स को, है ना, जिसमें पेपर वर्क कम होता है, जिसमें दे हैव टू बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी सिर्फ उनका थंब इंप्रेशन जाता है और उसके बदले में दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. वहीं से तो एक्सप्लॉयटेशन होता आया अभी तक फार्मर्स का. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर नॉट लीगल सोर्सेज, दे आर ओनली क्रिएटेड बाय द पीपल अराउंड. ओके, और उसके लिए उनको फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, उनको नहीं करने पड़ते. सो दे आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल क्रेडिट इन India. Now second question, what are the main institutional sources of rural credit in India? आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे रूरल रीजनल बैंक्स हो गए, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अदर कमर्शियल बैंक्स विच आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग क्रेडिट in the rural areas for their own demands, they are actually the main institutional sources for rural credit. Now examples are given here. Cooperative credit societies, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये भी आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा, दे ऑल आर वर्किंग अंडर नबार्ड. स्टूडेंट्स, इसमें आपको इंपॉर्टेंट है डेट्स भी लर्न करना, लाइक द सेटअप डेट ऑफ नबार्ड एस्टेब्लिश जब हुआ था. तो देखिए, जो भी हमारे डाटास गिवन होते हैं चैप्टर में, आपको वो डाटास बहुत जो मेन है सिर्फ वो लर्न करने होते हैं. अदरवाइज सीबीएसई जो है वो डाटास की मार्किंग नहीं करती है. अगर कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइक डेट्स, तो वी कैन से दैट इट इज इंपॉर्टेंट, डाटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें हैं, इसको ज्यादा मार्किंग स्कीम में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं. सो यू हैव टू मेक वन चार्ट in which you can mention all the important dates, like for 5-year plans we will be doing in chapter 2. So for that I will be suggesting you the ways that you have to write all the dates on one big paper and paste it on your
study table so that आप आते जाते अपनी dates को कम से कम remind करते रहो. Dates are important. Okay. So what are suggestive measures to overcome the problems of marketing system in India? इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स फार्मर्स के लिए मार्केटिंग सिस्टम में है उसके लिए सजेस्टिव मेजर्स चाहिए हमको. सो एमएसपी पॉलिसी कैन बी वन. अभी आपने आजकल सुना होगा हमारे फार्मर्स जो है, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब हरियाणा, दे आर गैदरिंग एट दिल्ली बॉर्डर. उनको क्या प्रॉब्लम है? यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस बिकॉज दे आर in interest in talking to the government because they have already passed a bill which is called as farmers bill. Farmer bill se related they have some own issues which they want to discuss with the government, and one of their demand is that government should make a law on MSP. ठीक है, तो आप लोग इसको स्टडी करिए प्लीज. लेटेस्ट न्यूज अपनी सुनते रहिए बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम द लेटेस्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इन योर एग्जाम. ओके, कोविड-19 हो गया आपका, फार्मर्स बिल हो गया आपका. यू शुड गो थ्रू दीज टॉपिक्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. So MSP policy is one way. Regulated markets. The government is providing a regulated market to a farmer so that he can bring his produce there. He can get the best prices which are offered by the government for the farmers. Subsidized transport. Now, what is this subsidized transport means? When the farmers are able to send their product or to take their product to other areas on the cheaper rates, on the subsidized rates. So when the government is providing the farmers the easy or the cheaper way of transportation for their commodities which they have produced, they can reach to another markets also. So they will be getting wider markets by the help of this subsidized transport. So these are some suggestions which can help us to overcome the marketing system of rural areas. Okay, now discuss the role of cooperatives in rural credit. Cooperative credit societies अभी हमने पढ़ा था. So role क्या है? Timely and rapid flow of credit. टाइमली मतलब जिस समय चाहिए. ऐसा नहीं हो कि फार्मर को आज फार्मर ने लोन अप्लाई किया और उसको 6 मंथ्स बाद मिल रहा है. 6 मंथ्स तो एक क्रॉप का टाइम है ना. आपने सुना होगा खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. सो 6 मंथ्स में तो उनकी एक क्रॉप रेडी हो जाती है. सो टाइमली अगर उनको मिलता रहे और रैपिड फ्लो में रहे. रैपिड इज स्पीड में टाइमली अगर उनके पास क्रेडिट पहुंच जाए. दिस इज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स. जो मनी लेंडर्स के क्लचेस से बचाए, वो जो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, थोड़ा सा पैसा प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, है ना. या फिर उनके और टर्म्स जो होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, उन चीजों को एलिमिनेट कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना. प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट. और जितना क्रेडिट चाहिए कोशिश करके उतना क्रेडिट उनको प्रोवाइड करवाना इज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन रूरल क्रेडिट. नाउ दिस इज रिपोर्ट 2. दिस इज आल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स टाइम्स. Just read it out. The government is fast tracking the integration of e-national agricultural market. That is very popular by the name of ENAM, with farmer produce organizations, that is FPO, and warehouses which have been declared as market yards to provide end-to-end connectivity to farmers. क्या काम है उनका? वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, ताकि अगर उनके पास एक्स्ट्रा क्रॉप्स हैं तो वो वेयर हाउसेस में रख सकें. और जब उनको अपने फार्मर्स मतलब जब फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए अच्छा पैसा मिले, अच्छा पैसा ऑफर हो मार्केट में, वो तभी बेचें. उनको जबरदस्ती कोई प्रेशर ना हो कि इनको अभी बेचना पड़ेगा. ऑलराइट. एंड व्हाट सम अदर थिंग्स आल्सो. किस लिए? ताकि वो इंटीग्रेट कर सके पूरी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को. ठीक. It will then connect these FPOs and warehouses. FPOs क्या है हमारे? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. उसको अगर ई-नाम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? विद द ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर मोबाइल ऐप किसान रथ for seamless supply linkages to interstate and intrastate buyers. The
App brings together, ध्यान से देखो, the app bring together 5 lakh trucks and 20,000 tractors on a mobile platform. App provide करवा रही है 20,000 tractors और 5 लाख ट्रक, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सके फार्मर के लिए अपने प्रोड्यूस को वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में, सॉरी, कंट्री वाइड वो कहीं पे भी ले जाके बेच सकता है. इंटरस्टेट अपने स्टेट के अंदर भी, इंट्रास्टेट इज आउटसाइड द स्टेट, सो कहीं पे भी वो ले जाके उसको सेल ऑफ कर सके. प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस टू मार्केट्स फ्रॉम फार्म गेट. So this was the report. Now question based on this paragraph. Here they are talking about agricultural marketing by selling off their product. So let's read about this agricultural marketing. It includes gathering the produce after harvesting. Harvesting के बाद gather करना, सारे product को इकट्ठा करना, processing करना उसमें से, like आपने देखा होगा इसको प्रेशर से हवा के आगे लाया जाता है ताकि उसमें से जितने भी एक्स्ट्रा हमारे उसके कवर्स होते हैं वो रिमूव किए जा सके. तो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अगर बहुत अच्छा क्रॉप है तो उसको ए ग्रेड दिया जाता है, अगर थोड़ी उसकी क्वालिटी कम है तो अकॉर्डिंगली दे विल बी गिवन ग्रेड्स. देन पैकेजिंग एंड फॉर द future sale. This all process will be done on the crop for selling them in future on better rates. This is agricultural marketing. Now, what are the arrangements of agricultural marketing in India? अब इंडिया में हमारे क्या क्या वो हैं? गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज मंडीज. आपने सुना होगा मंडीज लोकल एरिया में गवर्नमेंट सेट करवाती है. अभी हमने रेगुलेटेड मार्केट्स के बारे में पढ़ा था. There are many other ways, and now the latest is Farmers Bill, which is providing new opportunities to the farmers. You must read about the Farmers Bill. There are points which are very much related to this chapter. So you should be aware of each and every point of Farmers Bill. What are the provisions which are given under the Farmer Bill, and what are the points where farmers are creating the issues, where they have doubts in the bill. All right, so you should be aware of each and everything. Now, third question is highlight the problems of distress sales. Distress sales मैंने अभी आपको बताया, जब farmers को pressure हो जाता है, because see, once their crop is ready, if the farmer is not in very well off condition, they need urgent money, so they have to sell their product at the price whatever is offered in the market to them, है ना. तो जबरदस्ती सेल करना हो गया. Second thing, when they don't have the space to keep their produce, बारिश हो जाए सब खराब हो जाएगा, उससे बचने के लिए, अपने लॉसेस से बचने के लिए, they have to sell it immediately in the market on the price whatever is offered to them. So this is called as distress sales. जबरदस्ती प्रेशर में आ गई. When farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, कटिंग के बाद जल्दी से उनको बेचना पड़ता है, no matter how low the market price is. कितना ही कम मिलेगा प्राइस. आप सोच के देखो, एज अ प्रोड्यूसर, अगर आपको अर्जेंसी है कि आपको पैसा चाहिए, तो आप कुछ भी रेट पे बेचोगे. ठीक है, उठा लो, बस मुझे पैसे चाहिए. सो दिस कम्स ऑन द फार्मर्स ऑल्सो. What are the steps taken by the government to overcome the problems of agricultural marketing? अब agricultural marketing हमने पढ़ा, processing, grading, packaging. ओके, सो इससे जो प्रॉब्लम्स ये इसको प्रैक्टिकली नहीं होने देती, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो हम देखते हैं. और उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं. गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स दिए, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज सेटअप की, गवर्नमेंट ने वेयर हाउसेस प्रोवाइड करवाए ताकि रख सकें. सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, अभी हमने डिस्कस किया कि सस्ते रेट्स पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाना ताकि फार्मर्स अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके सेल ऑफ कर सके. डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना. अगर फार्मर्स के पास पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है दैट दे कैन सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट इन दिस मार्केट, इन सच एंड सच मार्केट, इन सच एंड सच प्राइस, so if they will be having the information, then they will only try to reach to those areas, है ना. एंड मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, ऑफ कोर्स मिनिमम सपोर्ट जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द
farmers. Which bill is recently passed for farmers? अभी मैंने आपको बताया, that was farmers bill or agricultural bill. Okay, now another is third report. This is a part of farmers bill. Okay, now bill on contract farming. ये क्या कहता है? द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन. फार्मर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक हमारा पॉइंट जो आया है फार्मर्स बिल में, दैट इज एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज. दिस इज बिल 2020. अब इसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं देखिए. फार्मर्स कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एग्री बिजनेस फर्म्स, processors, wholesalers, exporters on large retailers for sale of future farming produce at a pre-agreed price. यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं फार्मर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बड़ी कंपनीज फॉर एग्जांपल चिप्स की कंपनी है, अंकल चिप्स. अंकल चिप्स को लार्ज अमाउंट में पोटैटोज चाहिए तो वो क्या करें, एक पूरे गांव के पास गए और पूरे फार्मर्स को एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे लिए पोटैटोज लगाइए, इस क्वालिटी के पोटैटोज लगाइए और हम आपको इतने रुपीस पर केजी या पर क्विंटल के हिसाब से प्राइस दे देंगे. ओके, नाउ फार्मर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं. ठीक, इसमें हमारे प्रोसेसर्स आएंगे, आगे होलसेलर्स आएंगे, एक्सपोर्टर्स आएंगे. इन लोगों के साथ अगर फार्मर्स एग्री कर जाते हैं प्रोडक्शन करने पर, तो उनके पास क्या श्योरिटी है? उनके पास श्योरिटी है कि हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो हमारा इस रेट पर बिक जाएगा. तो देयर इज नो स्कोप ऑफ लॉस फॉर द फार्मर्स. उनको पता है कि उनको इतने रेट पर ये प्रॉफिट मिलने वाला है. राइट. मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स विद लैंड लेस देन 5 हेक्टेयर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम लैंड है, टू गेन वाया एग्रीगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट. अब वो क्या करेंगे? उन लोगों के लिए फायदा है. हमारे पास 86% ऑफ द फार्मर्स जो हैं दे आर inclusive of marginal and small farmers only. If you remember the chapter which we have done in class 9th village Palampur, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हमारे बहुत ज्यादा अमाउंट में है. हमारे पास वो वाले फार्मर्स जो रिच कहलाते हैं, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है, वो कम है. मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ज्यादा है. सो उनके लिए ये बहुत फायदा देगा क्योंकि उनका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उनका प्रोडक्शन इतने रेट पे बिकेगा. राइट. टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर्स टू स्पॉन्सर्स. क्या फायदा है? मार्केट में रेट्स की कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी पड़ेगी. उनको पहले ही पता होगा कि उनके प्राइसेस ये लगने वाले हैं. और क्या फायदा है? प्रोविजन क्या है? टू एनेबल फार्मर्स टू असेस मॉडर्न टेक एंड गेट बेटर इनपुट्स. जब बड़ी बड़ी कंपनीज खुद उनके साथ जाके कॉन्टैक्ट करेंगी तो वो उनको अच्छी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छे इनपुट्स भी देंगे, रॉ मटेरियल अच्छा देंगे, सीड्स अच्छे देंगे क्योंकि उनको बेटर क्वालिटी चाहिए. देन टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम. अब उनको मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं करना. उनको पता है उनका प्रोड्यूस बस तैयार होने की देर है, कंपनी विल बी परचेजिंग इट या विल बी टेकिंग इट. तो उनको कोई मार्केटिंग का रिस्क नहीं है. फार्मर्स कैन एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज. जितना भी ये इंटरमीडियरीज पैसा खा रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा. डायरेक्टली कंपनी टू फार्मर की डील हो जाएगी. इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म विद रिड्रेसल टाइमलाइंस. ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर ये इम्प्लीकेशन हो जाता है इसका तो. Now let's see the questions. How will you relate the above with the general reforms in agricultural marketing? क्या प्रॉब्लम की बात चल रही है यहाँ पे? क्या आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जो हमारे मेजर्स लिए जाते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में? इट विल बी हेल्पफुल, डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर रिमूविंग द इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज क्यों पैसा खा रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं फार्मर्स, मेहनत कर रहे हैं फार्मर्स और उन्हीं को उनके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिल रहा है. दे आर द कल्टिवेटर्स, वी आर डिपेंडिंग अपॉन दोस. अगर हमारे लिए वो बनाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, है ना? So this is the hard work of the farmer and they only should get the correct prices of their produce. So जो intermediaries का role है that will be totally removed. So it is related to
this. Now, will the above give substantial rise in acreage? Acreage सबसे पहले मीनिंग समझेंगे हम. Acreage होता है हमारा the area which is coming under cultivation. ओके अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो हमने रिपोर्ट पढ़ी, क्या इस रिपोर्ट की वजह से हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा? तो डेफिनेटली बेटा, जब हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको लगेगा कि उनको अच्छा रेट मिलने वाला है, तो दे ऑल विल बी वर्किंग इफेक्टिवली, है ना. तो हमारा इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस आपने पढ़ा होगा जरूर. It means where we efficiently use the resources. हमको सबको पता है. देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ने का हमारा बेसिक रीजन क्या है? We all know that we have limited resources and unlimited wants. रिसोर्सेस क्या होते हैं? जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. दैट दे आर द रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्री. तो लैंड इज इटसेल्फ अ रिसोर्स. अब हमको पता है, फार्मर्स को पता है, जो लैंड ओनर्स है, कि उनको अपने हिसाब से प्रोडक्शन करना है, तो दे बिकम कैजुअल, है ना. लेकिन जब उनको पता है कि उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो एफिशिएंटली यूज करेंगे अपने रिसोर्स को, ताकि उनको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले और उस प्रोडक्शन की वजह से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. Okay, so as farmers will get the direct benefits of the production, so definitely more amount of land will be used for the same. Next question. How will it affect substantial farming? Substantial farming किसे बोलते हैं? जब हम अपने यूज के लिए फार्मिंग करते हैं. फार्मर्स क्योंकि छोटे छोटे लैंड्स थे उनके पास, तो वो अपने गुजारे के लिए, अपने साल भर के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके लेकिन जब उनको प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, व्हेन कंपनी विल बी कॉन्टैक्टिंग दोस फार्मर्स डायरेक्टली, वो उनको मोटिवेशन देगा कि हाँ, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे या हम इस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, इससे हमको प्रॉफिट होगा और उसको बेच के हम अपनी बाकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो इट विल मोटिवेट द फार्मर्स टू कमर्शियलाइज देयर प्रोड्यूस. बेच देंगे वो उसको प्रॉफिट के लिए, फॉर मोर बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स. What are the possible points in opposition of the above provision? अब मैंने अभी आपको बताया, farmers are gathering at the borders because they want to talk with government. तो उनको क्या objections हो सकती हैं? Farmers in contract farming arrangements will be weaker players in terms of their ability to negotiate what they need. क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स हैं, कंपनीज बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका रोल जो है वो ज्यादा हैवी हो जाता है, बिकॉज दे आर द रिच पीपल. तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि फार्मर्स जो है वो वीक पड़ जाएं. फाइन. Second point, the sponsors may not like to deal with multitude of small and marginal farmers. बड़ी कंपनीज, बड़े स्पॉन्सर्स क्या प्रेफर करेंगे कि बड़े बड़े रिच फार्मर्स जिनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड है, उनके साथ वो पैसा लगाएं अपना. हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना लें कि बहुत सारे छोटे लोगों के साथ, क्योंकि उतने ही लोगों के साथ उनको पर्सनली डील करना पड़ेगा. तो दे मे प्रेफर टू डील विद द large big farmers. Next point, which can be the objection, being big private companies or exporters or wholesalers and processors, जो भी जाके डील कर रहा है फार्मर्स के साथ, the sponsors will have an edge over dispute. अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो चांसेस क्या हैं कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो लोग उन डिस्प्यूट्स को जीतेंगे, है ना, बिकॉज दे आर द ओनर्स, दे आर द rich people who can have their edge over the poor people. Now, again, this report 4 is a part of farmers bill only. Okay, now in which we are going to read about bill relating to the commodities, the essential commodities. Okay, इसमें amendment किया गया है, इसमें changes किए गए हैं. देखिए, first point क्या कहता है? To remove commodities like cereals, pulses, oil seeds, onions and potatoes. इन सारी चीजों को रिमूव कर देना, किसमें से? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ असेंशियल कमोडिटीज. असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से इनको हटा दिया. इट विल डू अवे विद द इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन सच आइटम्स. इनकी स्टॉक होल्डिंग से सारी लिमिट्स हटा दी जाएंगी. किसके अलावा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, लाइक जब वॉर वगैरह होगा, उसके अलावा इनकी
कितनी भी की जा सकती है स्टॉकिंग। दिस प्रोविजन विल अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि वो उसको स्टॉक करेंगे और जब पैसे बढ़ेंगे मार्केट में तब वो उसको सेल ऑफ करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, बाहर से जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट के ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये वाला बिल का पार्ट अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फार्म सेक्टर में। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपको पता होगा, वो इंडस्ट्रीज के सेटअप में होती है, सर्विसेज के लिए होती है। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन पुटिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनको फार्म सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए एक अट्रैक्शन मिल रहा है। ओके, as it will remove fears of private investors of excessive regulatory interference in business operation। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है क्योंकि वो उनको छूट दे रहे हैं। To bring investment for farm infrastructure like cold storage and modernizing food supply chain। किसमें इन्वेस्टमेंट होगा? फार्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वेयर हाउसेस जिनमें कोल्ड स्टोरेजेस इंक्लूडेड है। कोल्ड स्टोरेजेस क्या होते हैं? अभी क्रॉप प्रोड्यूस हुआ, इसको हम साल भर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता है ना। सो कोल्ड स्टोरेजेस का अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि स्टॉकिंग इजी हो गया, अलाउड हो गया। टू हेल्प बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बाय ब्रिंगिंग इन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, जब किसी चीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लाइक बारिश नहीं हुई, कोई क्रॉप खराब हो गई, तो वो महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर फार्मर्स के पास वो चीज पहले ही स्टॉक में है तो प्राइस स्टेबिलिटी रह सकती है, उस स्टॉक को निकाल दिया जाएगा। एंड टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एनवायरमेंट एंड कट वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी बिल्कुल। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ अ बिल। नाउ क्वेश्चन, when the farmer sells the agriculture surplus to sahukars tradesmen at lower prices, it's known as। जब फार्मर्स को कम रेट्स पर लोगों को बेचना पड़ जाता है अपने प्रोड्यूस को, क्या बोलते हैं उसको? अभी हमने डिस्कस किया था, डिस्ट्रेस सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। आपने NAFED के नाम बारे में सुना है। अब देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको डेट्स लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2 अक्टूबर 1958 को हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। All right. Announcement of prices of agricultural goods every year is known as। हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस। वो प्राइसेस कौन से होते हैं? जो मिनिमम प्राइसेस होते हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, एंड दैट आर नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Next question, what type of revolution is called between 1991 and 2003? 91 से 2003 के बीच में। देखो, बिफोर डिस्कसिंग दिस रिवॉल्यूशन, लेट मी टेल यू, हमारे 3 रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन, एक गोल्डन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम क्या बात करते हैं? जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना शुरू किया था, ओके, जो हमारे क्रॉप से रिलेटेड थे, उसको बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर आया हमारा मिल्क रिवॉल्यूशन। मिल्क रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम मिल्क रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसमें सारे पूरे विलेज एरिया से सारे मिल्क को इकट्ठा किया गया और उस मिल्क को फिर प्रोसेस करके और फिर आउटसाइड दोस पर्टिकुलर एरियाज उनको कहीं पे भी सेल ऑफ करने के लिए भेजा गया। तो एकदम से मिल्क के उसमें रिवॉल्यूशन आया था। थर्ड रिवॉल्यूशन आया हमारा जब हमने वेजिटेबल्स पे और हनी पे इनके प्रोडक्शन को इतना ज्यादा बूस्ट अप किया, इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। सो these were the 3 revolutions। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? वो रिवॉल्यूशन जो 91 और 2003 के बीच में था, एंड दैट वाज टर्म्ड एज गोल्डन रिवॉल्यूशन व्हिच वाज रिलेटेड टू हनी एंड हॉर्टिकल्चर। Okay, what do you understand by the MSP? MSP क्या है? In whose favor government proposes the policy? MSP is an assurance। assurance मतलब गारंटी, है ना? assurance करना farmers को that their produce would be purchased by the government at specified prices। अब आप सोचो, मैं अगर फार्मर हूं और मुझे पता है मैं वीट प्रोड्यूस करूंगी
तो गवर्नमेंट मुझसे मिनिमम इतने प्राइसेस पे तो खरीदेगी ही। अगर मैं एश्योर्ड हो जाती हूँ कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो लॉस पे नहीं होगा, है ना, जितना मैं खर्चा कर रही हूँ मेरे को वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मेरा निकलेगा ही, प्लस मुझे उतना मिल जाएगा कि मैं सरवाइव कर सकूं, तो ही मैं प्रोडक्शन करूंगी। अदरवाइज मेरा प्रोडक्शन करने का क्या मतलब है अगर मुझे उतना भी नहीं मिलता जितना मेरी जेब से खर्चा हो रहा है या मेरे को जितना मेरे ईयर के लिए सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो नहीं करूंगी। तो फॉर मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स, फार्मर्स का इंटरेस्ट बना रहे फार्मिंग में, इसके लिए गवर्नमेंट एमएसपी की एश्योरेंस देती है। आपको पता होगा हमारे कंट्री में स्टिल द पीपल, द फार्मर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचता है। तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट for assuring the farmers that they should be motivated for producing the crops. All right, so it is in the favor of producers, farmers के favor के लिए ही इसको government announce करती है। So that is all by my side from this chapter. I hope you understand all those questions. All right, sir. Hello. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this beautiful presentation. जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि हम 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे थे। आज बहुत अच्छा सेशन गया है मैम। कमेंट्स भी बहुत सारे आए बच्चों के कि एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी था, और एकदम न्यू मतलब एसेशन रीजन केस स्टडी से बेस्ड बच्चों को आज बहुत अच्छा मटेरियल इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गया है। और कभी भी बच्चे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, जिससे कि जो भी आगे बच्चे देखें। और मैंने लाइव कमेंट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उसको फिल कर दें, जिससे कि आपको जो भी आज मैम ने सेशन लिया है उससे केस स्टडी से एसेशन रीजन से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको अटेम्प्ट करिए। अगर 40% आप मार्क्स उसमें लेके आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा आपके मेल आईडी पे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिंक को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वेबिनार्स होंगे आपको उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैम ने आज एसेशन रीजन केस स्टडी, ऐसे ही आगे और भी प्रोग्राम्स होते रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा अवेलेबल हो जाएगा एक मटेरियल यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जरूर बने रहें। Thank you so much. Yeah, sure. Thank you so much, Priyanka ma'am. Students, if you have any doubt, please, ma'am, feedback form में do they have such option like they can ask? Yeah, ma'am. Yeah. They can ask. They can ask in this live comment box also. I don't think in that feedback form they are having some. Okay, fine. चलिए, okay. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you so much. Do fill the link, beta. You will be getting the certificates as well. It will be helpful for you also. Thank you so much. Thank you so much.